So yes guys, good morning. This is another day. Now it is 6:30 in the morning. मैं सॉरी आज थोड़ा लेट उठा बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मैं कल ही घर से वापस आया हूँ. बट एज यू नो कि हाँ कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, तो मैंने इस बार छुट्टी भी नहीं मारी सेमेस्टर में. सो आई विल जस्ट गो टू माई होम वेरी 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 सून. मैं आज से 4 या 5 दिन बाद आई बिलीव आई विल जस्ट गो टू माई होम एंड टेक अ होल वीक ऑफ, बिकॉज वीक में 2 दिन की छुट्टी है एंड 4 days आई टेक ऑफ so that we can do our work full focus. So yes, after such a long time the price has finally broken above the 200 EMA after such a big downward rally to the downside. Price is not respecting our liquidity levels kind of. So let me just show you that what my expectations are and what I expect. Yes people, as you can clearly see, this is what the price has been currently doing. We can see this is the 200 EMA after such a huge rally to the downside. As you can clearly see, the price was above 200 EMA for such a long time when it was in rally, but yes, it broke down. As you can see, the price started a retracement to the downside move, which was extremely healthy and necessary for the rally. It did, and as you can see, multiple times it reached 200 EMA, grabbed liquidity and fell to the downside. That is why I say the 200 EMA is a very 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 high liquidity point. As you can clearly see, 1 2 3, and on the fourth touch finally the price went all the way towards upside. That is where I took my entry, because I believe that this time, as you can see, price was showing great momentum, the price would probably take out the 200 EMA, and it did. So what also it is not breaking out this level, as you can see. So what we can expect, as you can see, price is getting no liquidity levels. I do not take these levels as much important, because these are formed by 200 EMA. So I believe that we can see a bull trend now. Finally we are back in the bulls, and we can see bull trend. And currently I do not have any bias. I'll just look. As you can see, my signals are showing that there could be sharp fall to the downside, and and if it did, it would be a fake out to the above 200 EMA, and I do not have currently have a bias. So let's see what happens. Today is Friday, and as you can see, Saturday and Sunday will be off. So आज हमें एक पोजीशन लेनी है. Let's see what happens. If I talk about yesterday's position, as you can see, I took 2 positions yesterday. I'll just show you clearly. As you can see, this was what booked in the night. I booked $22, $42 and $60 on this position. That you can say is approximately of $565 minus here. So that is approximately $500 on this position. But the fact is that I lost approximately of $400 earlier. As you can see, that is approximately of what you can say $500 on that position only, or even more, $600, $520 on that. So I went negative $60 on the day. बट मैं कॉलेज चला गया था, इसकी वजह से मैं ये पोजीशन अभी नहीं ले पाया था प्रॉपरली. सो व्हाट आई डिड वाज दैट आई जस्ट इन्वेस्टेड टू द डाउन साइड, बिकॉज एज यू कैन सी द स्ट्रॉन्ग द ट्रेंड वाज स्ट्रॉन्ग. सो मुझे लगा था कि प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा, बट इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द डाउन साइड इट मेड अ डबल टॉप पैटर्न एट दिस लेवल एंड वेंट टू द अपसाइड. वेल टू मी मेरी एंट्री बहुत शार्प थी, बस मैंने यहाँ पे डाउनवर्ड लिया. अगर मैं यहाँ पे बुलिश पोजीशन ले लेता तो मैं यहाँ से यहाँ तक पूरा ये 30% का मूव कैप्चर कर लेता. दिस हैव बीन ह्यूज. सो आई एम नॉट वरी, बिकॉज मैंने स्टॉप अपना मिनिमल रखा था, बट स्टिल प्राइस ने यहीं से शार्पली रिएक्ट करा. दैट इज़ व्हाट आई वांट. आई जस्ट वांट द प्राइस टू रिएक्ट शार्पली. अगर मैं ऊपर लगा था तो प्राइस में कैप्चर कर लेता, तो मैं नीचे लगाया. नो वरीज. So this was in level. So yeah, this is what I lost, and the position that I missed was that because price यहाँ से भी मैं कॉलेज से कैसे नहीं ले पाया. प्राइस ने यहाँ बुलिश पोजीशन टैप कर ली, तो मेरा बायस बुलिश शिफ्ट हो गया. एज यू कैन सी स्टोचैस्टिक्स ने भी क्रॉस ओवर कर दिया, 100 EMA भी क्रॉस ओवर कर दिया. एज यू कैन सी प्राइस ने ब्रेकआउट करते हुए लेवल को एक FVG क्रिएट करा. FVG उसने रीटेस्ट करा. दैट इज़ वेयर माई एंट्री वुड हैव बीन, क्योंकि यहाँ पे जो मोमेंटम है प्राइस का वो शिफ्ट हो गया बुलिश की तरफ. तो यहाँ पर हम पोजीशन लेता अपनी ऑन दिस रीटेस्ट ऑफ दिस FVG, और यहाँ से यहाँ तक मैं पूरा मूव कैप्चर कर सकता था. आफ्टर दैट एज यू कैन सी प्राइस ने मेजर लिक्विडिटी यहाँ यूज़ कर दी, तो इस लेवल को ब्रेकआउट करना बहुत मुश्किल था. और जो 200 EMA भी थी, तो यहाँ पर हमने बेरिश एंट्री ले सकता था. यहाँ पर मैं बेरिश एंट्री लेता, यहाँ से यहाँ तक का फुल मूव कैप्चर कर लेता. बट स्टिल आई मूव, ये मेरी 2 ट्रेड्स मिस हुई हैं कल की. बट नो वरीज, आई कैप्चर्ड मूव फ्रॉम जस्ट राइट हेयर टू जस्ट राइट हेयर. सो आई एम नेगेटिव डॉलर्स, सो आई एम नेगेटिव $60 ऑन येस्टरडे. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुडे. Just now it is 8:14 और प्राइस अब बेरिश मोमेंटम शो कर रहा है. आई शुड हैव टेकन द एंट्री बट आई डिडंट, क्योंकि प्राइस 200 EMA के बहुत नियर था.
and वहाँ पर volatile होता है. Also the trend is not specified currently, so but I should have taken the entry because 200 EMA and the liquidity level दोनों एक साथ थे, and price is showing now great impulse and continuous signal to the downside. And if it does continue, I will be looking to buy at the next potential support. So let me just show you. Yes guys, as you can clearly see, um, this is where I took my yesterday's position because I expected the price will break out the 200 EMA. It did. I took out my position just right here at 12% on two positions, 60%, 3% just right here on this, and a loss just right here. So as you can see, the price is now breaking up below the 200 EMA. Also my indications are showing bearish continuation, and I believe it will continue to the downside. But I'm still not sure because 200 EMA bhi hai and we do not have a trend specified. So if price fall downs, I will just look for the next potential entry. So now it is 8:41 to be exact, and price keeps pushing to the downside. I missed the entry, but well, no worries, because I was thinking कि price ने अब momentum अपना bullish की तरफ shift कर लिया है, but instead of bullish shifting, it is now pushing to the downside. So let's see what happens. I still believe कि momentum है bullish अभी, but still we are very 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 uncertain in terms of economy, क्योंकि अभी हमारी economic shutdown है, और अगर reads अच्छी आती हैं तो gold could probably fall in a big decline. So yes, let's see what happens, and I'll look for the opportunities at the next important liquidity level. Now I'm just getting ready, and let's go to college to waste your time. I do not know when it is all going to be worth it, because I literally have no one on my side currently. Literally no one. I just sit alone, just work alone, I just grind alone. And also दिक्कतें भी कम नहीं हो रही, problems keep on increasing. That hurts me even more. I do not know when it is all going to be worth it. कब फ़ायदा मिलेगा, कब कुछ होगा. Because yes, it's tough to be honest. कुछ फ़ायदा नहीं होता, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, सिर्फ प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं उसके से. But still I have to just pull off. Currently it is 2 o'clock and 3.5 hour more to go. Let's see what happens. So yes, this is what I think the path of trading looks like, full of loneliness, because it teaches you that you have to be alone in this shit. I believe अगर ये चीज़ करनी है तो आपको अकेले रहना पड़ेगा, and that is what I see in many people. जो biggest traders हैं उनके बारे में देखा, and that is what I'm currently having. I do not have any friends, do not have no one to talk to, do not have no one to talk my tell my problems about. I keep getting into the worst situations, but I still push through. That is what I want, no matter if I'm alone for the rest of my life, but I just want to do what I have to do, and I just want to become a very successful trader very soon enough. This is it. So yes guys, okay, now it is 5:46 to be exact, and now without wasting any time, I'll just change my clothes up and we'll get straight to the charts. Okay, so now after consolidating after such a long time, the price finally distributed to the downside in a great momentum. मैंने एक भी एंट्री नहीं ली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आई न्यू कि प्राइस 200 EMA के बहुत नियर था, एंड ऑल्सो इट वॉज कंसोलिडेटिंग फ्रॉम द मॉर्निंग ओनली. सो इसके से मुझे कोई भी प्रॉपर एक एंट्री सेटअप नहीं मिला. दैट इज़ वाई आई डिडंट टुक द एंट्री, बट द प्राइस इज डिस्ट्रीब्यूटिंग टू द डाउन साइड नाउ, and if it goes all the way toward downside to the next liquidity level traveling, then I think we could have our next bullish entry at that level, because I believe that price is going to be consolidated in the current times, because of the fact कि अभी हमारे पास कोई भी एक स्पेसिफिक एक बायस नहीं है कि प्राइस किस तरफ जाएगा. हमारे पास कोई एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं है. गोल्ड के लिए एक न्यूट्रल सिचुएशन है. सो लेट मी जस्ट शो यू. So yes guys, as you can clearly see, I have been watching market from the morning only, just from this right here. As you can see, the price
मल्टीपल टाइम्स हमें ऐसा लगा कि एंट्री देगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बेरिश एंट्री ले लेता था, मैं ले लेता तो मैं लूज़ कर जाता उसको। सो दैट इज़ वाई आई प्रेफर कि 200 EMA के नियर प्राइस जब भी हो, जब भी आपके पास कोई एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस ना हो, आप एंट्री ना लें। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस आई कुड हैव टेकन दी एंट्री, बट स्टिल एज यू कैन सी प्राइस ने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर अनइवन मूवमेंट दिखाए। दैट इज़ वाई आई लेट इट प्राइस डिस्ट्रीब्यूट। अगर प्राइस एक बिग कैंडल की तरह क्लोज करता है एंड फॉल ऑल द वे डाउन टूवर्ड दिस नेक्स्ट लेवल, दैट इज़ द 3945 लेवल, if price just keeps pushing to the downside just right here, so that is where I'm going to take my next bullish entry. Also today is Friday, so कल से market close हो जाएगा and I believe कि मैं next time अपने घर पे होऊंगा. सो यस, एज आई टोल्ड यू पीपल, मैंने इस सेमेस्टर बिल्कुल भी छुट्टी नहीं ली. बहुत मुश्किल था, बट स्टिल आई डिड दैट बिकॉज आई न्यू कि मुझे आखिरी में आके इसके लिए खुद के लिए टाइम मिलेगा, एंड दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ. सो आई केम ऑन वेडनेसडे एंड आई विल मैं अपने घर वापस चला जाऊँगा ऑन मंडे और मैक्स टू मैक्स ट्यूसडे, एंड आई विल स्टे देयर फॉर अ होल वीक because that is where I can get time, that is where I am fully focused on myself, and this is it. So my next entry would be only when price reaches the next liquidity level, otherwise I'm not going to take any entry. I update you guys on the position. ऑल्सो अगर प्राइस एक एफ की तरह क्रूज करता है, इम्बैलेंस लेकर के नीचे की तरफ कंटिन्यूशन करता है, तभी मैं बुलिश एंट्री ही लूँगा. आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनी शॉर्ट एंट्रीज करेंटली. सो आई वेट यू गाइज ऑन दिस पोजिशन. आई विल जस्ट upload my video right now, and after that we'll start with our journalizing, and we'll carry on with the rest of our stuff. Today is Saturday, tomorrow Saturday, और कल की छुट्टी है because it's 4th Saturday. So yes, मुझे अपने लिए और भी काम मिल जाएगा, हालांकि थोड़े से और प्रॉब्लम्स हैं ड्यू टू माई एग्जाम्स जो मेरे रह रहे हैं पहले के, सो वो मुझको देने पड़ेंगे आफ्टर दैट. सो येस, आई अपडेट यू गाइस मोर. मैं इसके बारे में और बताऊँगा. So now without wasting in time, I'll just upload my video and I'll see you in a bit. So now it is 10:37 in the night, and the price after creating the big bearish candle is now kind of making a retracement move to the upside. मैं अपनी एंट्री तभी लूँगा जब प्राइस नीचे आएगा टू द सपोर्ट लेवल, यहाँ पर मैं अपनी एंट्री ले सकूँ. अदरवाइज आई एम नॉट विलिंग टू टेक एनी एंट्री, बट आई एम जस्ट काइंड ऑफ कन्फ्यूज. मेरे पास दो लेवल्स है कहाँ पर मुझको एंट्री लेनी चाहिए. लेट मी शो यू. Yes guys, we can clearly see is that the price fell down and gained momentum, and as you can see it is just flowing to downside. This is the higher time frame, और हम देख सकते हैं कि एक लिक्विडिटी पॉइंट हमारा इस जगह जो कि हमारी यहाँ पर लंदन एंड यहाँ पर हमारी लंदन एंड यहाँ हमारी न्यूयॉर्क लोज हैं. सो आई थिंक दैट लेवल ऑल्सो कंटेन्स ग्रेट अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी. ऑल्सो वी सी अ ग्रेट लिक्विडिटी इंजेक्शन जस्ट राइट हियर विच रीच्ड the 4013 level, as you can clearly see. And now and I'm kind of sure that price will definitely move to the downside. बस मुझे ये कन्फ्यूजन हो रही है कि मुझको अपने ऑर्डर्स यहाँ पर ओपन करने चाहिए या फिर नहीं. व्हाट आई एम विलिंग टू डू इज़ दैट बिकॉज दिस इज़ अ लेवल ऑफ हाई इंटरेस्ट. अगर प्राइस यहाँ पर लो मोमेंटम दिखाता है एंड काइंड ऑफ बुलिश सिग्नल दिखाता है, तो यहाँ पर मैं अपने ऑर्डर्स खोल दूँगा, बुलिश एंट्री लूँगा. इफ़ प्राइस रिवर्सेस देन आई विल by using a minimal stop loss I will enter, I'll be exiting this position, this trade with a minimal loss, and then I will be taking my next bullish entry just right here. I'm sure that price will bounce off either from this level or either from this level. That is what I want to see, that is what I expect. Currently we can see price is gaining momentum. So yes guys, now it is 11:43 to be exact, and the price is gaining bullish momentum. As I said, the price is clearing out the FVG, but my entry point would be as you know at the nearby liquidity point only, because वहीं पर liquidity available है. So I will just let the position trail. I'll just open my orders at the 3945 level, because I believe that is where the strong liquidity is available. And I'm still doing my work. मेरा work complete हो चुका है. I'm going to end my video soon क्योंकि सबको सोना है, and मैं थोड़ा लेट तक जाग रहा हूँ आज. So
let me show you that what is happening in the chart, and let us open orders and then we'll sleep. So yes guys, as you can clearly see, this was the move that I was talking about. And the price distributed to the downside. The price didn't reach any of the liquidity levels, but grab liquidity in order to cure this imbalance. I still believe as the price flows below the 200 EMA, that price will probably move to the downside, and after moving to the downside could move up or will move to the upside. That is what I expect. So I'm just going to open my orders just right here, because that is the more secure point than this level. This is it, and I'll update you guys on the position. Let me just open my orders. So now it is nearby 12. The price is still moving to the upside, gaining good bullish momentum. I opened my orders at the recent 3961 level, जहाँ पर हमारी लंदन एंड न्यूयॉर्क सेशन की जो लोज है वो अवेलेबल है, बिकॉज आई बिलीव दैट प्राइस could even distribute डाउन साइड एंड देन मूव टू द अपसाइड. We do not have a particular bias currently, but yes, my idea is kind of shifting, that the bearish sense is currently high in the market by looking at all the factors, but let's see कि क्या होता है. So let me just show you that where my orders are open, and then I'm going to sleep. My journalizing is complete, my reading is complete, my video upload is complete, and my this video recording is complete also. So yes guys, as you can clearly see, this is the 3961 level. That is where exactly my orders are open, because this is just right here. This is the New York high and this is the London high. So I believe this is a good liquidity level. Price can even at the market opening could even on the next Monday could even flow to the downside, grab liquidity on this level and then move to the upside, or even can take it to the downside. If it does take it out, then I would exit the position with a minimal loss, and then I will look for another bullish positions at this level or even lower. So yes, this is it. I'll update you guys on the position. My orders are open. Stop loss just beneath this level, just right here at 1%, and take profit will all the way towards just right here at 15-16%. I'll update you guys on Monday about it. And yes, as you can clearly see, the price is currently gaining great bullish momentum after मेकिंग अ ग्रेट बेरिश कैंडल. ऐसा जब ही होता है, ऐसा मोस्टली होता है क्योंकि प्राइस भी इसका इम्बैलेंस क्लियर कर रहा है, एंड मोस्ट प्रोबेबली इम्बैलेंस क्लियर करने के बाद इट विल मूव टू द डाउन साइड टू अवर एरिया ऑफ सपोर्ट. Yes guys, this was it for the day. I'm sorry आज की वीडियो थोड़ी डिटेल नहीं बना पाया, बिकॉज आई एम काइंड ऑफ टायर्ड, एंड नाउ इट इज़ 11:42 to be exact, sorry 11:49 to be exact, एंड इट इज़ नियर बाय 12. मेरे ऑर्डर्स ओपन हो चुके हैं. डिड माई एनालिसिस. आज कुछ हमें एंट्री नहीं मिल पाई बिकॉज प्राइस वॉज काइंड ऑफ कंसोलिडेटेड. वी कैन सी प्राइस ने एक डबल टॉप फॉर्म करा है, बट दैट वाज नॉट वैलिडेटेड क्योंकि उसकी जो शेडोज़ हैं हाइज उसके मैच नहीं करते, और जो कि मैं आपको कल बताऊँगा और डीपली. I have completed my journalizing, I have completed my reading in the college only, I have completed my each and every work, I have completed my video, and yep, each and everything is now complete. Also, let me just show you one more thing, that is I want you to do, that is called micro planning. Plan your day. As you can see, 31st of October 25, I marked all my goals, and as you can see, all of my goals are checked. All of my things are complete for the day, and now I'm going to sleep. प्लीज़ स्टार्ट माइक्रो प्लानिंग. इट हेल्प्स मी अलॉट क्योंकि इससे टाइम वेस्ट नहीं होता सोचने में कि कल क्या करना है. अपना एक रात पहले ही सब प्लान करके सो दिस इज़ इट, एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो. पीस.